It's Thursday night and the action resumes in eISL, brought to you by Nodwin Gaming. And my name is Fixes. I'm joined along with TTR. So we have come to a phase where, like we've already said yesterday and the day before, that we are having the final few games of the remainder of the clubs that we have with us. So everybody needs to finish their goals of 10 matches. So most of them have done 8. A few of them have already gotten with 9. And tonight, every single match really counts, and for every single club. For a few clubs, it might just be to establish the dominion on the top 3, but for the rest, it is all about trying to stay in the top 6. And TT, how do you feel you're under pressure? Because I have the same feeling because of what's going to या happen. क्योंकि आज देखिए जितने भी क्लब्स हैं, जैसे कि आपने एकदम सही कहा कि कुछ-कुछ क्लब्स हैं जो कि अपना पोजीशन जो है वो एकदम टॉप पे सेटल करने वाले हैं और कुछ-कुछ क्लब्स ऐसे हैं जिनका अभी सिचुएशन काइंड ऑफ हम लोग कह सकते हैं कि वो झूल रहे हैं, जस्ट राइट लेफ्ट, क्या वो जाएंगे नहीं जाएंगे, बीच में इधर फंस चुके हैं. सो या जब हम लोग को मैचअप आएगा तब हम लोग और भी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से डिस्कशन कर पाएंगे, तब पता चलेगा. लेकिन एक चीज़ तो है कि आज बहुत ही एक्शन पैक गेम देखने के लिए मिलेगा. Yeah, there's no doubt on that. There's वो कोई दौरा ही नहीं है कि एक्शन पैक तो रहने वाला है. बट जो भी हमारे नए दर्शक है, एक बारी वाकिफ करा देते हैं आपको फॉर्मेट के साथ. तो फॉर्मेट कुछ इस प्रकार है. जो लीग स्टेजेस अभी चल रहे हैं वो शुरू हुए थे 28 फरवरी को और ये चलेंगे 26 अप्रैल तक. एंड फिर होगा प्लेऑफ्स. दैट इज फ्रॉम 6th of May till the 7th of May. So 2 दिन का रहने वाला है. We'll find the winners. एंड जो भी विनर्स रहेंगे उनको एक मौका मिलेगा कि FCS 2023 के प्ले इन टूर्नामेंट में खेल पाएं. So direct golden ticket there and chance to represent the country, something really huge, along with the prize pool that comes in. 33 lakh rupees is on the line, and the first position team gets 4.5 lakh rupees. The second gets 2 lakh rupees. The third and fourth share 75,000 each. And from here onwards, we've got a few clubs that have been absolutely dominating, like FC Goa. But then there have been clubs who have been having really gloomy days, like Jamshedpur FC and Odisha FC, both of which we're going to see in action tonight. And talking about all these clubs, let's take a look at the schedule for the evening. And TT, tell me, which matchup are you the most excited about? फॉर श्योर, नो डाउट, आखिरी मैचअप जो है वो आज का सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एटी के मोहन बगान के लिए, क्योंकि बैंगलोर एफसी तो ऑलरेडी अपना पोजीशन बना चुके हैं. लेकिन आज शुरू करेंगे हम लोग हैदराबाद एफसी एंड जमशेदपुर एफसी के मैच के साथ. ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गेम है, क्योंकि हैदराबाद एफसी, उनका फॉर्म उतना खास चल नहीं रहा था. काइंड ऑफ हम लोग कह सकते हैं थोड़ा डाइसी चल रहा है. कभी मैच जीत रहे हैं, कभी हार रहे हैं. पोजीशन सही है, पोजीशन जो है वो बहुत अच्छे बना के रखे हैं, एंड वो अगर एक मैच जीतते हैं तब उनका पोजीशन और बेहतर हो जाएगा. लेकिन जो फॉर्म है उसको बेहतर करने की जरूरत है. ऑन द अदर हैंड जमशेदपुर एफसी, अरविंद का फॉर्म उतना खास चल नहीं रहा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रहा था. फिर उसके बाद आता है ओडिशा एफसी वर्सेस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड. एंड ओडिशा एफसी, जैसे कि हम लोग इधर पॉइंट्स टेबल पे देख पा ही रहे हैं कि 9 गेम्स ऑलरेडी ओडिशा एफसी का हो चुका है, और दैट मीन्स ये आखिरी गेम होने जा रहा है आज के दिन पे. और इस पे अगर वो जीतते भी है फिर भी 9 पॉइंट होगा. दैट मीन्स एटी के मोहन बगान के साथ वो टाई कर पाएंगे. और एटी के मोहन बगान अगर आज एक भी पॉइंट निकाल के लेके जाते हैं तो ओडिशा एफसी के क्वालिफिकेशन के जो चांसेस हैं वो 0 हो जाएगा. सो ओडिशा एफसी के लिए भी बहुत जरूरी है कि वो आज के मैच को जीते, ताकि एटलीस्ट लक के ऊपर जो है वो छोड़ सके कि हाँ एक थोड़ा बहुत मौका मिले. Yeah, I mean, a lot of permutation combinations are being made over here, Yeah. folks. And we'll have to do that because, the things are getting so nervy at this point. It just could be any club. But let's take a look at the first matchup that we have for the evening. Hyderabad FC taking on Jamshedpur FC. So, Genesis decides to open up against Arvind. So, Jamshedpur FC have gotten to their old starting order. And for Hyderabad FC, they've kept it pretty simple there. No changes whatsoever. So for Hyderabad FC, I think it's a must-win game considering the situation that they're in. Because up until yesterday, they were at the 6th spot. Then suddenly have come down to the 7th. Considering ATKMB, they played really well, climbed up over there. I think that was day before. But regardless, Hyderabad FC, they have to do anything and everything at this point. They cannot afford to lose even a single game. And even a draw is something that's not going to make the cut for them. So for Jamshedpur FC, they've got 3 games remaining and now just merely at 2 points.
uh, even if they win all of their games from here onwards, they go and end at 18, where already you can see the likes of Chennai and FC being there. And considering there are certain clubs that have still got a few more matches to play, Hmm. they are going to be at their mercy. So it's about these clubs that are above them, just barely above them, losing their games and them winning their games. So the conditions are very tough, and Yeah. to have the best possible chance of trying to make it to the playoffs, it's simple. Right? You have to win all your games, and a draw Yes. is not gonna is not gonna suffice. But talking about the matchups over here, Genesid against Arvin. You've got Genesid, who's had kind of a dicey form, to be honest, because when Genesid starts, it feels like all right, he's the boss, he's the king, and he runs the show. But there have been days, TT, where we suddenly start questioning: is this the Yeah. same Genesid? Is he playing? Is this the same account that he's playing from? What's going on? Because suddenly you witness a completely different player that kind of drops a few games, and that has been one of the biggest problems for Hyderabad FC. And if Genesid goes off to a good start and they fare well in the co-op, I think things should be sunny over there. But for Jamshedpur FC, what's gone wrong, TT? आई थिंक ये कहना बहुत टफ है, क्योंकि देखिए जब शुरू हुआ था उस टाइम पे हम लोगों को टेनिसेट की तरफ से बहुत शानदार गेम देखने के लिए मिल रहा था, एंड आखिर में जाके वर्सी के ऊपर उतना सारा प्रेशर नहीं था कि वर्सी को हर मैच पे परफॉर्म करना है, लेकिन वो चीज एक मैच के बाद से ही चेंज होता हुआ दिखा। उस पे जेनेसिड तो परफॉर्म कर रहे थे, बट वॉर्सी उस टाइम पे चल नहीं रहे थे उतने बेहतर लेवल पे। फिर एक टाइम ऐसा आया कि जेनेसिड थोड़ा डाउन परफॉर्म किए, वॉर्सी इधर चल गए, क्लचेस भी निकाले हैं, ड्रॉज भी किए हैं। बट ऐसे आपका कब तक चलेगा? ये सबसे बड़े बड़ी क्वेश्चन है कि आपका सेम तरीके से कब तक चलेगा, क्योंकि आपको दोनों ही प्लेयर्स को जो है वो काइंड ऑफ परफॉर्म करने की जरूरत है। अगर कंटिन्यूअसली एक प्लेयर आपका डाउन ही चल रहा है, तब आपको तो वो इम्पैक्ट करने ही करने वाला है। तो ये सब जो सिनेरियो है, ये इसी वजह से इतना सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट किया है। बट आज के दिन पे जीतना चाहेंगे, 2 गेम्स बाकी हैं, उन दोनों गेम से एटलीस्ट वो इधर से 6 पॉइंट जो है वो निकाल के लेके जाने की कोशिश तो बिल्कुल करने वाले हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग बात करें इधर जमशेदपुर एफसी की, अभी भी 2 पॉइंट पे हैं, 7 मैचेस खेले हैं, 3 पॉइंट 3 गेम्स अभी भी बाकी हैं, तो 11 तक पहुंच सकते हैं, जिधर चेन्नई एफसी ऑलरेडी बैठे हैं। तो आई थिंक कि इधर जो सिनेरियोज है दोनों ही क्लब्स के लिए बहुत टफ है, बट फिर भी हैदराबाद एफसी के लिए थोड़ा बहुत मौका है कि वो इधर से चले जाए आगे, और वो यही चाहेंगे कि एटीके मोहन बगान या फिर चेन्नई एफसी दोनों में से कोई ना कोई एक बॉटल कर जाए, जिसकी वजह से हैदराबाद एफसी को मौका मिल जाए। लेकिन सिर्फ लक के ऊपर नहीं, उनको बैक टू बैक 2 गेम जीतने भी होंगे। आज जमशेदपुर को हराना बहुत जरूरी है। Yeah, I think there's no doubt on that, and they will have to put their best foot forward. And for Jamshedpur FC, I think I've been pretty impressed with DK, with how he's been playing, but Arvind has been quite gloomy, and this is where I think he has a chance to reclaim his lost pride, redeem himself. And as you can see, it's already kick-off. We've got Hyderabad FC from left to right, the blue jerseys, and we've got Jamshedpur FC from right to left. Now, with the way things have begun, I mean, a lot of new cards have come up that these players are, using these days. We've seen the new Maldini, the new R9, but right now, Genesid is intent on trying to make a play going through that right-hand side, but did not happen, was well averted by Arvind. Now, the big question is, from here onwards, what's going to be Arvind's style of approach? Because we've seen Genesid is a player that has got a lot going in his arsenal, right? He's one of those players who kind of starts with a 5-4-1 and still manages to score somehow. Ideally, it's a little defensive lineup, but he's got the right instructions made. And where you can see Arvind is keeping a more tighter approach. Now, this is where if Genesid sort of starts exploiting the wings, which he's doing, then sooner or later, I think TT, we are bound to find the first opening goal from Hyderabad FC. या मोस्टली हो तो सकता है, और देखिए बीच में एक मौका भी बन रहा है। और अरविंद के लिए अगर बात करें, तो अरविंद का कॉन्फिडेंस अभी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है, क्योंकि देखिए एक प्लेयर बार-बार कोशिश कर रहे हैं हर एक मैच में, लेकिन जो रिजल्ट्स है वो उनके लिए सही नहीं आ रहा, तो कॉन्फिडेंस तो मुश्किल होता है। बट उसी के बीच में मौका बन रहा था, वैसे बहुत शानदार मौका था, लेकिन डिफेंस बहुत ही लाजवाब तरीके से किया गया, एकदम ऑन पॉइंट था उधर वर्जिल वैन डाइक, एंड जिसकी वजह से
अभी के लिए तो खतरा टल चुका है और बहुत ही सूझबूझ के साथ इधर पासिंग किया जा रहा है क्योंकि उनको भी पता है बॉल नहीं निकलना चाहिए, इस बार हो जाएगा ऑफसाइड। छोड़ा कुछ मिलीसेकंड्स अगर पहले बॉल इधर रिलीज कर सकते तो टन इधर ये ऑफसाइड नहीं होता एंड एक बहुत शानदार मूव बन सकता था। शुरुआती स्टेज जेनेसिड थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव दिख रहे थे पूरे 13 मिनट के गेम की अगर बात किया जाए, क्योंकि एक ही अटैक अरविंद की तरफ से देखने के लिए मिला। लेफ्ट हैंड साइड से इस बार देखिए टैल, कोशिश यही है कि हकीमी को थोड़ा दूर लाया जाए, लिए भी बट वो ढुली फाइनली इंटरसेप्ट करते हुए दिखेंगे, जिसकी वजह से जो सोच रहे थे इधर जेनेसिड वो अभी के लिए तो पूरा नहीं हुआ। बट अरविंद के लिए भी इधर एक बहुत ही अच्छा चांस है क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि अरविंद का उतना खास फॉर्म नहीं चल रहा है, सेम विद जेनेसिड ऑल्सो। जेनेसिड का भी फॉर्म थोड़ा डाइसी चल रहा है, तो इधर दोनों में से किसी के पास भी चांस हो सकते हैं इस पूरे मैच को निकाल कर लेने। Yeah, but you know, Genesir is going to be the hot favorite, at least for the flashy plays that he has created, the moments that he had made. But right now, Arvind might be looking at a first goal. Could be poached, and yes, it is. Yes, it is. Oh, Genesir suddenly just taken aback there, and Arvind off to a flyer of a start. Beautiful goal coming in, and initially just got deflected from the keeper, but then the new foot, Bertie Icon, Eusebio was there to grasp it and make sure that it was converted. Did not let the chance go in vain. And Jamshedpur FC for the first time, Arvind, he's taken the lead right now. And from here onwards, I think the fact that you were talking about his lost confidence, I think some of it might have just returned back, and he needs to press it. But for Genesid, he looks to have fire in his eyes, instantly takes a shot, and a sucker punch for Arvind as he comes back right into the game. And I was just barely done talking, and Hyderabad FC, they've equalized, Kiti. क्या गेम है ये, क्योंकि शुरुआत में तो कंसीडर टूट नहीं रहा था पहले 15 मिनट, फिर उसके बाद के 5 मिनट में 2 गोल्स भी आ गए, वो भी दोनों अलग अलग साइड से। एक और मौका अरविंद के लिए, लेकिन पास था वो लूशियो ऑलरेडी, लेकिन जेनेसिड पहले से ही समझ चुके थे कि इधर एक पास आने वाला है, तो वो अपना पोजीशनिंग उस तरीके से बनाए। बट अरविंद आज मुझे लगता है कि उनको डर के नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि देखिए उनके पास खोने के लिए भी ज़्यादा कुछ नहीं है, उनको पाने के लिए बहुत कुछ है, तो उनको इधर से जीतना होगा हर एक गेम, उस मेंटलिटी के साथ आना होगा। और वो मेंटलिटी तभी हो सकता है जब आपके अंदर से फियर निकल जाए, और मुझे लगता है कि अरविंद के अंदर से जब फियर निकल जाएगा वो और बेहतर परफॉर्म करेगा, क्योंकि वो बहुत प्रेशर में खेल रहे थे इतने दिनों से। शुरुआत हो चुका है पहले गोल के साथ, लेकिन जो अंतिम गोल है वो भी उनको करना है अगर उनका कॉन्फिडेंस वापसी कराना है, क्योंकि इसके बाद कोऑप बहुत टफ होने वाला है इधर जमशेदपुर एफसी के लिए। क्योंकि पहला गेम जब हुआ था उस टाइम पे हम लोगों को लगा था कि ये जमशेदपुर एफसी बहुत अच्छे कोऑप गेम पे है, लेकिन धीरे धीरे जितना टाइम गया उधर भी प्रॉब्लम्स हम लोगों को क्रिएट होते हुए दिखे। सो जमशेदपुर एफसी बाय एनी हाउ उनको ये गेम जीतने की ज़रूरत है, ताकि एक एडवांटेज एटलीस्ट बना ले। बट व्हाट ऑल 33 मिनट्स का गेम ऑलरेडी हो चुका है, काइंड ऑफ हम लोग कह सकते हैं 30% गेम इधर हो चुका है ख़त्म, और दोनों का ही जो स्कोर लाइन है वो भी के लिए इक्वल 1-1। हकीमी को एकदम बीच पे रह गया था, पासिंग रोनाल्डिनो टू रोनाल्डिनो, बट शॉट जो है वो पहुंचा नहीं। ओके, उसके बाद भी मौका था बट हकीमी की तरफ से बेहतरीन इंटरसेप्शन, जिसकी वजह से इस बार के लिए खतरा टल गया, At least for now. And you know what's kind of poking me again is why is Genesid having Yusuf Atal as his left wing back? Ideally you see him as your right wing back, or maybe your CDM, or maybe on the right midfield. But he's playing on the left hand side. I don't know if how is he even managing with that one less game? Of course, League One player. But still, unless you get it to the right place, you're not going to get that game. It had happened before. I was talking about Atala and somebody scored. But regardless, this time, however, Genesid was quite watchful, did not let that happen. Now we're seeing a lot of variations from Genesid's side. Now he's not, sometimes you've seen he's just directly going for the shot, no skill moves, nothing fancy. Find that area, find that room and take that shot. But this was a ball lost in a very crucial area, and there you go.
That वाओ! lob through pass given on towards R9, but Maldini trying to protect, and he will succeed. A flare clean tackle, but the ball has been stolen away again. आई थिंक जेनेसिड इधर बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल पोजीशन पे बॉल खो चुके हैं। पिछले बार भी था, उधर भी मौका था, इस बार भी मौका है। यूसेबियो बहुत शानदार स्किल मूव्स के साथ है एंड हम जानते हैं ये कार्ड बहुत स्ट्रांग है, बट अरविंद एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पे बॉल एक बार फिर से लूज किया एंड उसी के साथ फर्स्ट हाफ का जो विसल है वो बच चुका है। जमशेदपुर ऐसे अरविंद अभी तक बहुत ही अच्छे से इधर टक्कर देते हुए देखने के लिए मिले हैं एंड आई थिंक मुझे लग रहा है कि ज्यादातर जो प्रेशर है, इफेक्टिव पोजीशन जो है वो हम लोग को जमशेदपुर एफसी की तरफ से देखने के लिए मिला है। स्टार्टिंग हुआ था हैदराबाद एफसी की तरफ से, जब बार बार प्रेशर क्रिएट कर रहे थे, हाई प्रेस कर रहे थे, लेकिन बीच में जब एक गोल आया जमशेदपुर एफसी की तरफ से, वी नो कि उसके जस्ट कुछ देर के बाद इक्वलाइज भी हुआ, लेकिन जमशेदपुर एफसी की तरफ से जो वो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होता हुआ दिखा है एंड उनके तरफ से बहुत ज्यादा प्रेस आता हुआ दिखा है। सो दोनों ही तरफ से दो शॉट्स, बट जमशेदपुर एफसी के दोनों ही शॉट ऑन टारगेट देखने के लिए मिला है। सो काफी अच्छा एंड आई थिंक मुझे लग रहा है कि इधर प्रेडिक्ट करना बहुत टफ रहेगा, कोई भी तरफ गेम जा सकता है सेकंड हाफ में। Yeah, no doubt about that. But one other thing that we've seen, Genesid really gets deadly in that second half. You know, even he showcased the save when he went up against Nate. Now, the first half was a little slow, but eventually when he caught on, once he got that momentum, he never seemed like stopping at all. So I think all Jensen needs to do is find out a flow. He needs to find some cracks in Arvind's defense and just exploit that, break that apart and punish him. And for Arvind, I think I've been loving the kind of FIFA that he's been playing so far into the game. Has not just been defensive, but has been creating a lot of opportunities, a lot of chances. And despite having 5 players on the back, we see in those cracks in Genesid's defense. So it's going to be really important to see who finds that extra edge, who finds that angle. As again, the ball has gone out of play. And you can see Jamshedpur FC, no changes in their formation so far. Maybe a little bit of tactical changes because I think we kind of witnessed most of the player changes being made around that 65 to 70 minute mark. यस, बट देखिए जिस तरीके से अभी तक गेम चला है, आई थिंक इधर जो फ्रेश लेग्स है वो तो आएंगे ही। उसके साथ हालैंड फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हालैंड जब भी आए हैं तब जेनेसिड के लिए भी बहुत ज़्यादा काम करके गए हैं। बात कर ही रहे थे, हालैंड आ चुके हैं जेनेसिड की तरफ से और फाइनली ये जगह पे जो लॉब थ्रू पासेस है वो बहुत देखने के लिए मिलने वाला है जेनेसिड की तरफ से एटलीस्ट। सो लेट्स सी क्या होता है। एज ऑफ नाउ पास आने की कोशिश, पर देखिए वो मौका मिल नहीं रहा था, फाइनली मिल चुका है टुवर्ड्स पहले टू रोनाल्डो, बट वर्जिल वैन डाइक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक प्लेस पे इधर बॉल छीने, अगर नहीं छीनते तो हम जानते हैं कि रोनाल्डो का जो वो ट्रॉफी टाइटन कार्ड है वो क्या क्या कर सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं वो। I mean, I want to see someone do that. Just try to score something from a half line. I think we used to do that in maybe FIFA 17 or something. No players used to score from there, but yeah, it's FIFA 23 right now. Things are looking a lot more realistic as Arvind had almost taken that shot. Was not green time though, but could not go to that point because a nice sliding tackle comes, and both these players have been quite solid in their defense. Especially, I've been liking how Arvind has been defending because that was one of his biggest issues, and he has just improvised on that within a span of one day. So I think kudos to him for doing that. He's been very, very alert, and he's waiting for Genesid to commit a mistake. But this time, Genesid just lost the chance of his lifetime. How? He's furious. What went wrong? He had Pele right in front of Van der Sar. That was a free goal served on a silver platter by Arvind, and Genesid bottled that. नॉट ओनली दैट, लाइक इधर वैन डे सार बॉल सेव करने के बाद इतना क्लोज था उनका बॉल, फिर भी वैन डे सार चेज नहीं किए बॉल को। तो आई डोंट नो लाइक उधर हुआ क्या था, एंड सब मिला के चांस तो बना था इधर जेनेसिड के लिए, लेकिन जेनेसिड मिस कर गए। बट हालैंड शायद इधर आए थे, लेकिन हम लोग को पिच के ऊपर दिख नहीं रहे। तो आई थिंक
बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इस बार पहले बट मार्टिनी, वाओ! आज देखिए डिफेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये तो कह नहीं सकते, क्योंकि जिस जगह पे अलाउ कर रहे हैं बॉल लेके आने के लिए, इस जगह से गोल हो सकता है। लेकिन शॉट लेने के लिए वो स्पेस नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से अभी गोल नहीं हुआ है। तो डिफेंस काइंड ऑफ 50-50 चलता हुआ, क्या ये पास के साथ फिनिश कर पाएंगे? ओह माय गॉड! ओके, 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 ये ऑफसाइड था। Even I was having that same thought. But at least one good thing is that both these players, neither of them refusing to back off. They understand that a win is much necessary. You do not have room for error anymore. You have to score from every single chance that you get. Approaching those dying moments, Genesid cannot afford a draw here. He has to score, and so does Arvin. And Genesid has been just one step ahead in terms of how attacking he's been. I mean, Arvin just got one chance a couple of moments ago, but it has been Genesid who's been constantly keeping the press up, and they just flusters up that play, and the ball has been stolen. And suddenly, Arvin was on a counter. And both these players are losing the ball in those crucial midfield areas, which they need to avoid, right? They need to be decisive. They need to have one set routine that they need to execute in perfection and score that winner. Because whosoever scores a goal over here, I think will be the victor. So far, we are one each apiece, and we've seen Genesid repetitively trying to go for the elasticos and the reverse elasticos, right? Just trying to get through. Kind of a little bit of an inspiration taken from maybe his brother Lokmanyu, where Lokmanyu scored a winner, if you remember last night. I think that was something that even Lokmanyu must be really happy about. And Genesid has been trying to do a lot of that. But now, I think intended for a pass, goes with a driven pass though. And now on Mbappe, constantly just keeping the possession as much as he can. But TT, he's not getting the value yet. When is he going to get into that final third? When he's going to take a shot? आई थिंक यही बात करते करते ऑलरेडी हम लोग 85th मिनट पे पहुंच चुके हैं और ज़्यादा टाइम भी नहीं है। फाइनली अरविंद बॉल को बाहर करेंगे एंड उसी के साथ जो चेंजेस है वो किया जाएगा। वैसे आई थिंक फिक्सेस हम लोगों को दिखा था इधर कि हॉलैंड आ रहे हैं, माल्डिनी बाहर जा रहे हैं, बट वो हुआ नहीं वैसे। बट लेट्स सी। Must be a visual glitch, I'm pretty sure. हाँ, Because this is the moment I think where you would see everybody just going all out, right? I think this is the point where you go ultra attacking, and somebody has to take that risk. And when you do that, it's kind of a double-edged sword, right? You get your defensive line so high up that you get exposed. If somebody breaks for a counter attack, you're done and dusted. But this is a golden chance, and he needs to score. Gets in his golden man Haaland, and he will not disappoint. Genesid striking when the iron was hot. This goal was coming. We could sniff it, and he has converted and has managed to secure the second goal at such a crucial moment. With just mere 3 minutes remaining, Arvin needs to find an equalizer. And at this point, Arvin, he's got to go all out. And there you can see the changes being made. This absolutely changes the dynamics. This is where, Genesid could get his men back into 5-4-1, get it to ultra defensive, and get back to your old style of play, where Arvin, he might have just that one attack, and he will have to make it count. दैट फाइनली जो जरूरत था इधर हैदराबाद एफसी को, शुरुआत अच्छा वो उनको मिल चुका है। आखिरी 3 मिनट बाकी है, हालांकि इधर एक गोल स्कोर हो भी सकता है। हम लोग इसके पहले भी देखे आखिरी मिनट पे गोल स्कोर होते हुए, लेकिन उतना इजी नहीं होगा अरविंद के लिए। और अगर वो ये मैच उनके हाथ से निकल जाता है, दैट मींस इधर कोऑप आई थिंक बहुत टफ होगा जमशेदपुर एफसी के लिए, क्योंकि हैदराबाद एफसी अपने कोऑप पे तो काइंड ऑफ वो मैनेज कर लेते हैं, उनका जो गेम है वो निकल जाता है। तो लेट्स सी कि क्या होने वाला है, लेकिन ये आखिरी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्या एक इक्वलाइजर देखने के लिए मिलेगा जमशेदपुर एफसी की तरफ से, वो रहेगा सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात। रोनाल्डो की जगह पे मेसी को इधर लेके आया गया है, और विथ मेसी लेट्स सी क्या उन तक पहुंच भी पाता है कि नहीं बॉल। ये पहुंचे हैं, टाइम भी है थोड़ा बहुत,
लेफ्ट हैंड साइड से निकाल चुके हैं, बट आई थिंक इधर ग्राउंडेड पास भी बेहतर हो सकता था, बट लियोनेल मेसी, rio हर्नांडेज, एक पास एंड बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन नहीं, लूशियो द सेवियर काम कर चुके और हकीमी जस्ट उनका काम है कि वो बॉल लेके घूमे और वही हुआ, 2-1 के साथ हुआ मैच खत्म और हैदराबाद एफसी फाइनली विद दिस विन वो अपना जो मैचअप है वो शुरू कर चुके हैं बहुत ही अच्छे नोट पे। Yeah, a huge victory for Jamshedpur FC. Given the circumstances that Hyderabad FC are right now in, he needs to save them and he needs to keep the hopes alive. Because like we said, the path is already uphill. It's an enormous task that they need to accomplish, win all their games, and then I think we can say they have a chance. But there you see, Arvind had opened it up, and then right after that kickoff, we saw Genesis scores one more. And from there onwards, it was kind of a little even up until the end of the first half. Come at the second half, we see that Genesis, he's been getting a lot more aggro. He's been trying to create a lot of chances, but Arvind was holding on to his dear life and taking beating after beating after beating, but still was just in ashes. But then he makes that crucial substitute. He makes that crucial change, and then there was nothing that Arvind could do as Haaland nets it in and gets that winner for his club. And Hyderabad FC, a very important first match win, and Genesis finally must be satisfied with his performance. फॉर श्योर, क्योंकि देखिए इधर हो सकता है कि स्कोर लाइन बहुत ज़्यादा चेंज नहीं था, लेकिन जो ज़रूरत था वो है शुरुआत विन के साथ, वो उनको मिल चुका है। स्कोर कार्ड देखने से ही पता चल जाएगा कि क्या रहा था सिनारियो। 2-1 के साथ हम लोग को ये गेम जो है वो ख़त्म होता हुआ दिख चुका है, बट जो गेम 2 है आई थिंक यही डिसाइडर होने वाला है। इसी जगह पे हम लोग को पता चल जाएगा कि गेम जो है वो कौन सी तरफ जा रहा है। अगर ड्रॉ निकालने में कामयाब रहते हैं इधर जमशेदपुर एफसी, देन आखिरी गेम जो है वो बहुत बहुत लाइक नेल बैटिंग हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ से डीके, दूसरी तरफ से वॉर्सी एंड दोनों ही कहीं ना कहीं जो है वो बहुत कुछ अलग लेके आते हैं गेम के अंदर, जो कि शायद बाकी प्लेयर से नहीं दिखता है। वो एक एग्रेशन देखने के लिए मिलेगा गेम के अंदर जो दोनों ही तरफ से आएगा, एंड दोनों ही प्लेयर्स बहुत ज़्यादा एनिमेटेड है, तो मजा आएगा। एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं रहने वाली। लेकिन जो ये कोऑप गेम है, आई थिंक ये कोऑप गेम जमशेदपुर एफसी को बहुत केयरफुली हैंडल करना होगा। Yeah, and it's going to be difficult because now we've seen once Varsi and Genesis have the same harmonious heartbeat going on. They kind of figure things out. Then they become they become a force to be reckoned with, right? And this is where DK has to step up because Arvind, he must be shattered. To be honest, you feel bad for him there because, hey, TT, he had been defending in that second half with all his life, right? There was just that one chance that Arvind could have mustered up, but apart from that, it was all about Genesis going on attack, keeping possession. He was not getting enough of the ball there, and despite that, till that 87th minute, he could hold him up, and then he just breaks through, right? So difficult to contain a player like Genesis, and this is the point where you suddenly are in a state of defeat. And for Jamshedpur FC, like we've said, the sun is already just setting down on the horizon, literally at this point. So at this moment, I mean, if they lose that co-op game, or even if it ends as a draw, then there's literally nothing remaining. I mean, you could just say it's all over, but still we are just keeping the best possible match alive. Like, if everything just aligns for Jamshedpur FC, we are just considering the chances that they have. That is, they have to get to 11 points, and that is already a lot of clubs are very nearby, very close to that. Clubs are sitting at 9, 8. So just one victory and they get to 11. So, but Jamshedpur FC, they have to win the next 2 games. They have to secure those 3 points, because a draw over here is not going to make things better for them, because then Hyderabad FC will be assured that 1 point in their bags, and this is something that they cannot digest. And same for Hyderabad FC also. Just mere draws is not going to lead them anywhere. They have to win games. जी हाँ, क्योंकि ऑलरेडी एटी के मोहन बगान एक गेम कम खेल के भी उनसे आगे है। सो इधर 6th एंड 5th प्लेस पे अगर बात करें तो 11 पॉइंट्स के साथ इधर चेन्नई एफसी। सो बहुत सारे क्लब्स के लिए इधर प्रॉब्लमेटिक बन चुके हैं।
तो यस, जमशेदपुर एफसी अगर आज बाय एनी हाउ ड्रॉ भी कर जाते हैं, दैट मीन्स उनके लिए क्वालिफिकेशन के चांसेस जो है वो खत्म हो जाए, क्योंकि अगर आज ड्रॉ हो जाता है दैट मीन्स वो पहुंच सकते हैं ज्यादा से ज्यादा 9 पॉइंट्स तक, अगर नेक्स्ट गेम भी जाए तो। एंड 9 पॉइंट्स पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं इधर लाइक एडी के मोहन बगान। वो अगर एक गलत मतलब एक ड्रॉ भी निकाल लेते हैं, मुझे जिस तरीके का फॉर्म है वो बहुत अच्छा चल रहा है, वो ड्रॉ क्या वो जीत भी सकते हैं बहुत सारे गेम्स, हो सकता है कि सब गेम जीत जाए। उस जगह से उनका ड्रॉ इतना लक देखिए किसी को फेवर नहीं करता। अभी देखते हैं, लाइक सब कुछ डिपेंड करेगा आज के मैच के ऊपर और ये कोऑप के ऊपर। अगर इधर से 3 पॉइंट लेके जाना है तो कोऑप भी जीतना है, आखिरी गेम भी जीतना है। तो कोऑप विल बी द डिसाइडर कि क्या जमशेदपुर एफसी इस बार क्वालिफाई लाइक प्लेऑफ्स पे जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे। तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गेम है और यस आई थिंक उनके ऊपर प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा होगा। बट अरविंद के लिए मुझे थोड़ा ज़रूर खराब लगता है, क्योंकि देखिए अरविंद स्टार्टिंग से लेके अभी तक जितने भी मैचेस में थोड़ा अगर लीड भी लिए हो, लेकिन फिर भी वो लीड के साथ वो खत्म नहीं कर पाते। एंड उनका ड्रॉस भी बहुत कम हुआ है, ज्यादातर टाइम वो हारे हैं। तो थोड़ा बहुत देखिए एक किसी का फॉर्म खराब चल रहा है तो इतना भी अगर खराब चलेगा फिर तो कॉन्फिडेंस, हम लोग कहते हैं कि हाँ कॉन्फिडेंस रखो लेके आओ, लेकिन लाएंगे किधर से जब कुछ भी उनके लिए सही नहीं चल रहा। बट हाँ, होप फॉर द बेस्ट कि बहुत जल्दी उनका फॉर्म वापस आ जाए। Yeah, I mean, had there been a certain second leg or something, maybe, extra few matches, then this could have been a different story, right? The atmosphere हम्म, would have been different because now it's so tense, right? Every player, initially when, these players started the campaigns off, and yeah, for some teams, they started with a defeat, some teams with wins, and even after that defeat, you're pretty chill, right? It's just that one game. And suddenly, from one to, it's just that one game to, oh, shoot, we just have one game. That transition has been really quickly, and players haven't, it feels like, they're yet sort of settling down, right? Few clubs have done, and few clubs have gotten value for, few players have already gotten value for their clubs. That is there, we've seen, they're already on the top four. They're kind of pretty chill, they're settling, they're sitting and enjoying the other matches, just finding out who could be their next competitor, who's gonna pose a threat to them. But barring that, TT, I think, both these clubs, Hyderabad FC, I think they were one of the strongest contenders if you just look at the pen and paper lineup. Genesid and Varsi coming together, such a strong squad, and yet have not produced results as expected from a team, from a club like that, right? And the same yeah, could have been said for somebody like, Kerala Blasters FC also having Lokmanu and Shubham haven't reciprocated in that manner. But yes, Varsi, so far we've seen those individual brilliance from his side. But it's going to be really tough because again, he's going to face an informed DK, and we know how deadly an informed DK can be because he sort of scores goals in such fashion that we can't really predict. And Varsi, I yeah. think, really needs to watch out for those aerial attacks also coming in. फॉर श्योर, एंड आई थिंक वो एरियल अटैक्स तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डालने वाले हैं वर्सी को, क्योंकि वर्सी की तरफ से अगर बात किया जाए, वर्सी का स्ट्रेटजी थोड़ा अलग रहता है। वो ग्राउंड पास पे खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, वो थ्रूज भी निकालते हैं तो भी ग्राउंडेड ज़्यादा रहता है। एरियल बॉल हम लोग बहुत कम देखने के लिए मिले हम लोग को, एंड वो विंग्स पे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, राइट विंग लेफ्ट विंग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और जिस दिन यूज़ करते हैं उस दिन तो उनके लिए अच्छा जाता है, बट जिस दिन वो नहीं करते उस दिन उनको गोल भी नहीं मिलता है। तो आई थिंक वो विंग्स तो यूज़ करेंगे, लेकिन जब आप विंग को यूज करते हो दैट मीन्स आपके जो फुल बैक्स है वो भी इन्वॉल्व होंगे, फुल बैक्स Right. इन्वॉल्व होंगे, दैट मीन्स आपका उधर काम तमाम हो जाता है अगर एरियल बॉल जाता है आपके डिफेंस पे, क्योंकि आपके डिफेंडर्स हो सकते हैं कि उनके पास स्पेस है, लेकिन जो एक एक्स्ट्रा प्लेयर की जरूरत होता है डिफेंस पे जो कि दो साइड से अटैक करे या फिर दो साइड से प्रेशर बनाए बॉल को फिर से छीनने के लिए, वो नहीं बन पाएगा। तो आखिरी गेम तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यही शायद डिसाइडर होगा। कोऑप कोऑप पे अगर जमशेदपुर एफसी कहीं ना कहीं निकाल लेते हैं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जमशेदपुर एफसी की तरफ थोड़ा टिल्ट हो सकता है। Yeah, by और कहना कि निकाल लेते हैं, they have to get a win, right? जीतना अनिवार्य है उनके लिए, कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। और कुछ भी करे, कुछ भी करे, इस समय उन्हें जीतना ही पड़ेगा, नहीं तो सब खत्म। एंड नॉट जस्ट दे हैव टू विन दिस पर्टिकुलर गेम, they will also have to win that individual game that DK has to win his matches. In DK, I think we can say that yes, we believe in DK. He's been the reliable player for Jamshedpur FC. He's been getting a lot of positive results for them, and the matches that Jamshedpur FC have played, and
even have gotten those draws, because this is one of those clubs that hasn't gotten a win yet. So so far in those draws, I think DK had a huge role to play. So DK has to step up to the occasion, but he's got to do it twice. And Arvind, he needs to forget what happened in the previous game. It's all right, and so difficult for a player in such a competitive format where you've just taken a loss, and in the next 5 to 10 minutes you have to go for a hard reset, just slap yourself out of that, come back into reality, and then no time to remorse basically, and then you have to play again, and you have to be at your best, you have to be pushing your best foot forward, right? So this is where it becomes very difficult if you get into the psyche of a player, and I'm kind of wondering how all these players manage to do so, because they lose a game and suddenly it's when you lose a close game, so if you're getting thrashed, that's a whole different question. That it's like you never really cared what was going on, and it was out of your hands of what you can do. But this game, the one that we saw just earlier, where Genesid and we saw Arvind play facing off each other, it was that 87th minute winner. Now we have seen winners even scored late than this. We have seen players scoring winners at the 90th minute mark, sometimes during the stoppage time also. Uh, but still, the gravity of this match was such that one goal just completely changed it, and in such a crucial moment, there was nothing left for Arvind, and he had gotten really close to try and score a goal. But they could see the pressure had already engulfed him like an amoeba. So at this point, folks, let us know who you are supporting and which club representing, because Hyderabad FC and Jamshedpur FC, it is match on, folks. It's going to be a co-op matchup. Hyderabad FC again from left to right, and we've got Jamshedpur FC from right to left. यस एंड फाइनली शुरू हो चुका है जमशेदपुर एफसी के लिए उनके इस पूरे सीजन के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट गेम। ये 90 मिनट्स डिसाइड करेगा क्या वो और एक्स्ट्रा जो कुछ मिनट्स है इस पूरे सीजन 2 के अंदर वो खेलेंगे, या फिर सिर्फ और सिर्फ 10 गेम्स ही खेलने वाले हैं। तो बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा देखना किस तरीके से खेलते हैं। बट शुरुआत जेनेसिड एंड वॉर्सी के ही बॉल पोजीशन के साथ हुआ है। मौका बनाने की कोशिश बीचों बीच से, बहुत शानदार पास था, लेकिन उसी जगह पे जो इंटरसेप्शन, जो चैलेंज देखने के लिए मिला जमशेदपुर एफसी की तरफ से, वो भी बहुत ही ज़्यादा ऑन पॉइंट। रूडलीत टुवर्ड्स थियो हर्नांडेज। देखिए मौका धीरे धीरे बन रहा है। पहले का पोजीशनिंग बहुत अच्छा था कुछ देर पहले, बट उसके बाद वो मूव कर गए लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, लेकिन चैलेंज कर रहे हैं। मेसी का फिजिकल गेम इधर देखने के लिए मिलता हुआ, एंड उसी के साथ बॉल छीना जरूर गया था, लेकिन फिर भी देखिए ये गेम तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होने वाला है, क्योंकि इधर दोनों को ही पता है कि दोनों के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर एक तरफ हैदराबाद एफसी अपने 3 पॉइंट सिक्योर करना चाह रहे हैं इसी गेम को जीत के, ऑन द अदर हैंड जमशेदपुर एफसी सर्वाइवल के लिए खेल। Yeah, and with the game had already begun, Jamshedpur FC were looking deadly, but suddenly seemed like Hyderabad FC wanted to come back and get a counter done. The ball has been stolen away in a very crucial position, TT, with Capdevia trying to exploit that left wing, Kylian Mbappe. But yeah, Arvind and DK pretty sharp. And this time, Hyderabad FC have changed their formation. They're going for a 4-3-1. It's sort of the default formation that we see, the meta formation, as you can say. But Jamshedpur FC still sticking to 4-1-2-1-2. या बट आई थिंक अभी ये टैक्टिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करने वाले हैं। आप कितने अटैकर्स के साथ जा रहे हो, आपके ओपोनेंट के पास कितने डिफेंस है, क्या स्ट्रक्चर है, बहुत कुछ मैटर करने वाला है। एंड हम लोग ये चीज़ तो देख पाए हैं कि इन गेम जाके हमेशा चेंज किया जाता है, क्योंकि शुरुआती में जब गेम स्टार्ट होता है जो फॉर्मेशन दिखाया जाता है आपके ओपोनेंट को, वो फॉर्मेशन के साथ शुरू नहीं किया जाता है, चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन रहता है इन गेम चेंज करने का। तो वो चेंज करते हैं, जिसकी वजह से वो जो कुछ माइंड गेम्स है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बीच से एक रन निकलता हुआ, एंड यस जिडान के लिए बॉल था, बट नहीं, वो कंट्रोल नहीं कर पाए हेड के साथ। प्रेशर भी बहुत ज़्यादा बनाया गया था, बट ये दोनों ही क्लब्स यही चाह रहे हैं कि पहला गोल उनकी तरफ से ही आए। बहुत क्रूशियल पोजीशन पे ये बॉल छीना गया है, पहले ऑलरेडी मौजूद, पहले के पास बॉल लेके जाएंगे कि नहीं, गलत मूव, एंड बॉल उनसे छीना गया। और देखिए इधर पेले को अगर बॉल देता, आई थिंक थोड़ा और ब्रीथिंग स्पेस मिलता विद
पार्टी एंड शायद इधर हकीमी को और एडवांस करा सकते थे, लेकिन फिर से थ्रो इन एंड बॉल अभी के लिए तो जमशेदपुर को फिर से मिल जाएगा। और जब जब कंट्रोल आ रहा है उसका पूरा प्रॉपर यूज करना चाहिए। गलत पासेस के साथ अगर बॉल दे देंगे फिर बाद में जाके अटैक के लिए शायद इतना मौका ना मिले। रुडुलीत के साथ इंटरसेप्शन, बट फिर से बॉल छीना गया। एम्बापे खतरा बनता हुआ बहुत ही ज्यादा, और वो खतरा टला नहीं है। बीच में रोनाल्डो, बट रुडुलीत आज डिफेंसिवली बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। वैसे डिफ्लेक्शन बट वैन डे सार के सेफ हैंड्स पे। Yeah, no difficulties so far for Hyderabad FC have been dealing with the threat, but I like this pressing from Jamshedpur FC. They are showing an intent to score an early goal. Arvind had did so against Genesid, but it was again Genesid replying back in quick succession. And this time, both these clubs are playing quite end-to-end. We've seen both these clubs have the potential to create that chance, but the ball stolen away again by Theo Hernandez. And I think Theo Hernandez has sort of been one of the go-to left-back picks. It's either Theo Hernandez or Captain, whatever your choice. But between these two, we haven't seen anything else. For a super sub, we've seen in few moments that people tend to get Alphonso Davies. But there you go, beautiful turn there with Kylian Mbappe, and he takes a shot. Jamshedpur FC go ahead at that first goal, and in the 28th minute, they break the silence, and Hyderabad FC under extreme pressure over there. There you could see, just finding the top left corner, the keeper was left watching. Yeah. बहुत ज़्यादा ज़रूरी गोल था, जो कि अभी फिलहाल के लिए स्कोर कर दिया जा चुका है, और कहीं न कहीं इसको कहीं फॉर्ट करने की भी ज़रूरत है। एटलीस्ट ये जो डिफरेंस है उसको बना के रखना होगा। बाकी मैचेस की तरह अगर वो ये डिफरेंस को जाने देते हैं, इक्वलाइज कर लेते हैं हैदराबाद एफसी, देन इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन इस बार के लिए बॉल मिला है एम्बापे बीच से रन निकालते हुए, लेकिन रोनाल्डो मौजूद। रोनाल्डो रिवर्स इलास्टिको हो सकता था भाई, ओह माय गॉड, कर सकते थे इधर एक स्किल मूव, जरूरी था इधर एक स्किल मूव, बट जीता गया जिधर से बॉल बेहतरीन तरीके से छीना गया। बट लेट्स सी क्या होता है। ज़िनेडिन ज़िडान वन मोर टाइम, एंड जब से ये ट्रॉफी टाइटन कार्ड्स आए हैं तब से हम लोगों को दिख रहा है कि ज़िनेडिन ज़िडान का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। इसके पहले बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन थे जिनको यूज़ किया जा रहा था, बट देखिए इस बार काउंटर पे मौका बनता हुआ, लेकिन वर्जिल वैन डाइक सेवियर लास्ट मोमेंट पे आके बचाए। इंटरसेप्शन नहीं आता, एंड ये गोल हो सकता था हैदराबाद एफसी के लिए। हैदराबाद एफसी कोशिश उनके तरफ से यही है कि वो इधर से जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा बेहतर परफॉर्म करे। इस बार मौका, खाली पोजीशन, एम्बापे शॉट लेने का मौका नहीं मिला, या तो ये कह सकते हैं थोड़ा ज्यादा टाइम वेस्ट कर गए एम्बापे के साथ। बट कोशिश यही था कि वो एकदम 100% जब सोचेंगे गोल होगा। ओह नो, ये डिफ्लेक्शन था। I guess oh my so. god, what a save. Oh my goodness, what's going on in this game? It's going so end to end. Action happening, and this time looks to be a good chance. Wow! Ronaldinho! You beauty! He created magic then and there. Quick succession of those two skill moves combined and just splits the defense apart. There you see, goes for an elastico, then switches his legs, takes that shot. Wow! And Hyderabad FC TT, they stage a comeback already. I think ये गोल ड्रिबलिंग ऑफ द ईयर पे, ईयर तो नहीं, अगर मंथ हुआ तो उस पे जा सकता है। जिस तरीके से ड्रिबल किया गया इधर डिफेंडर्स को, लाजवाब था। बट पास देखिए एक बार, ओह नो, एक लाजवाब पास था ज़िडान की तरफ से जो कि इधर खेला गया था, ऑब्वियसली थ्रू या तो अरविंद या फिर डीके की तरफ से। बहुत शानदार वो पास था, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए। फर्स्ट हाफ एक बार फिर से 1-1 के साथ पिछले गेम का ही कहीं न कहीं
एक बार फिर से रिपुटेशन देख रहे हैं हम लोग, लग रहा है ऐसा। पिछले गेम पे भी यही हुआ था, हालांकि वो जो इक्वालाइजर था वो बहुत जल्दी आ गया था, लेकिन इस बार थोड़ा टाइम लगा, बट आया जरूर। लेकिन जमशेदपुर एफसी, उनको ये, आई थिंक उनको भी पता है, वो भी कैलकुलेट करके आए होंगे, उनको पता है कि ये 45 मिनट्स के अंदर एटलीस्ट एक गोल का बढ़त जो है वो लेके चलना ही है और इस मैच को जीतना है, नहीं तो उनके लिए जो आशाएं है वो प्ले ऑफ्स का, वो शायद खत्म होता हुआ दिख सकता है। बट हाफ टाइम के ऊपर चेंज कर रहे हैं, कैप्टिविया के जगह पे थियो हर्नांडेस को लेके आके जमशेद हैदराबाद एफसी। Yeah, a little bit of an extra pace that you get with Fernandes. I kind of like Theo Hernandez more, to be honest. But right now, oh, this could be a good chance. And this is for the first time, TT. First time we are seeing R9 taking a shot like that, and he missed. What are the odds? Yesterday, I think 3-4 attempts similarly were made, and every single one of them got in. And tonight, it's a different case. The goalkeeper, what was he doing? So outside, and Virgil van Dijk, well read there by Jamshedpur FC. Wow, huge mistake, TT. Yes, and I think गोलकीपर खुद से बाहर नहीं आता, उनको बाहर लेके आया गया था, जिसके वजह से इधर बीच में मौका मिला और उसका गोल एंड खामियाजा भुगते इधर हैदराबाद एफसी। हालांकि उनका सोच अलग था कि इधर क्रॉस करके जाएंगे तो डायरेक्टली इधर रिसीव करने के लिए, कैच करने के लिए बॉल को, लेकिन वो उनके अकॉर्डिंग चला नहीं। इसी बीच में हैदराबाद एफसी एक बार फिर से अटैक पे जा रहे हैं, और जमशेदपुर बहुत ही शानदार नोट पे खेलते हुए, एंड बात कर ही रहे थे, लूशियो बॉल छीनेंगे और उसी के साथ साथ बॉल अपने पास भी रखेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत है नहीं। ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे देन उनके लिए भी कुछ कुछ गलतियां हैं वो हो सकता है। बट लेफ्ट हैंड साइड से लाजवाब तरीके से लियोनेल मेसी बॉल लेके निकल चुके, एक पास एंड फिनिश कर सकते हैं विद रोनाल्डो। रोनाल्डो भी बॉल मौजूद, बट वर्जिल वैन डाइक बैक टू बैक, पहले रोनाल्डो एंड देन मेसी, दोनों के ही पैर से इधर बॉल छीने एंड अभी काउंटर पे जा सकते हैं। हैदराबाद एफसी के लिए जरूरत है जितना जल्दी हो सके वो गोल करे, नहीं तो प्रेशर धीरे धीरे करके बिल्डअप होता रहेगा। Yeah, I mean, right now, I'm still kind of taken aback with what we saw. A huge mistake, and that was such a nice read from Jamshedpur FC over there. Ooh, the tackle looked really deadly, but with Kylian Mbappe almost had gotten through, but Virgil van Dijk standing tall there, making sure that ball was fended off. But from here onwards, what do Hyderabad FC do? They've made a huge mistake, and that could cost them at this point. Going for a cross with Eusebio, takes that shot, but miles away from the goalpost. Now coming back, this is the point I would want to take a look at the highlight of that goal, because I felt there was a little bit of an extra elevation also added. So when you get your keeper up ahead, I think it's you would want to collect the ball instantly as that cross comes in. And lately, I think TT, you're aware that mostly the players are going for short corners, and this is, I think, one of the set piece routines that Jamshedpur FC might have practiced, and suddenly today they converted. And what a setup was given by Hyderabad FC boys, right? Just have the keeper away from the goal. There was an open goal, like a free goal, free target shooting for Virgil van Dijk, and we know he's a tall man and he has good heading abilities. He's not gonna miss. And Jamshedpur FC took over the lead. So 63 minutes into the game, you could see a few changes being made over there. And now let's see what impact does it create, because tremors are being felt from Hyderabad FC side. You could see them getting rattled a little bit, but that was a very awkward pass. Yeah. आखिरी कुछ मिनट बाकी है और अटैक पे जाते हुए दिख रहा है हैदराबाद एफसी, बट ये क्रॉस ऑन पॉइंट था नहीं, और वर्जिल वैन डाइक जैसे कि हम जानते हैं बहुत ही लंबे कद के प्लेयर हैं, तो मुश्किल नहीं हो। बट आई थिंक एक फाउल किया गया था जिसकी वजह से गेम रुका एंड फाइनली फिर से चालू हो चुके हैं। एंड विथ हकीमी, एंड स्पेशली आप देखिए कुछ टाइम से हम लोगों को बहुत ज़्यादा विंग का इस्तेमाल देखने के लिए मिल रहा है, वो चाहे मिडफील्ड से विंग पे जाए या फिर एकदम
डिफेंस से ही विंग टू विंग खेल रहे हो, लेकिन विंग का इस्तेमाल बहुत दिख रहा है। जिस टाइप का इधर फॉर्मेशन है, उसके हिसाब से विंग पे खेलना शायद उतना कोई यूज नहीं करता, लेकिन जमशेदपुर एफसी अपने फुल बैक्स को बार 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 चार्ज करा रहे हैं, जिसका प्रॉपर फायदा मिल रहा है। एक एक्स्ट्रा पासिंग ऑप्शन उनके लिए बन रहे हैं, और बार बार बैकलाइन के पास से वो जो पीछे एक बैक पास होता है, जिसकी वजह से पूरे डिफेंस जो है वो तितर बितर हो जाता है, वो पासेस देखने के लिए मिल रहे हैं। एंड हैदराबाद ऐसी उसी को काउंटर करने की कोशिश करेंगे, एंड सिर्फ काउंटर ही नहीं, उनको गोल स्कोर भी करना होगा, क्योंकि अगर ये गेम निकल जाता है, देन उसके बाद वॉर्सी को फेस करना होगा इनफॉर्म डीके को, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। तो आई थिंक बहुत ज्यादा सोच समझ के देख के इधर इस पूरे परफॉर्मेंस को जो है वो करना होगा। अभी भी हालांकि 20 मिनट बाकी है, हालैंड को लेके आया गया है रोनाल्डो की जगह पे, तो वो एक्स्ट्रा हाइट कहीं ना कहीं प्रोवाइड होता हुआ दिखेगा अटैकिंग पोजीशन पे, थ्रू बॉल्स जाते हुए दिखेंगे। बट हकीमी देखिए ऑलरेडी एडवांस कर चुके हैं। बात कर रहे थे हकीमी की, हकीमी के पास बॉल भी जाएगा बीचों बीच, लाइक एम्बापे ऑलरेडी मौजूद, एकदम Oh, फिर से मौका बनने की, no. बैकलाइन के बाहर चले गए। Yeah, that extra pace that, that happens when you just keep pressing that R2 and never let go of it. And it was such a nice ball that was received by Ashraf Hakimi there. But was kind of a great chance was foiled. Was looking for a cutback, but it not happen. So one thing we're witnessing is that Hyderabad FC are now playing on those long balls. They're trying to go for those crosses. The last two attacks have been coming from those crosses itself only. So at this point, getting Erling Haaland in, I think a better option is extremely good. With those headers, can just push through, has Oh, that physical presence. But now the ball stolen in a very interesting area, and this could prove fatal for Hyderabad FC. This could be the killer blow, and Jamshedpur FC have bottled it, and Hyderabad FC get yet another chance to live and survive over here. oh. But now Jamshedpur FC repeating their mistake. Theo Hernandez has a lot of room and space, wanted to dribble pass, but Lucio charges in at the right nick of time and saves the day. फॉर्मेशन देखिए इधर हैदराबाद एफसी की, टोटल कम से कम हम लोगों को जो 6 प्लेयर्स, 6 नहीं 8 प्लेयर्स जो हैं, वो हम लोगों को अटैक बनाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि 4 ऑलरेडी फॉरवर्ड पे हैं, 2 फुल बैक्स इधर पीछे जा रहे हैं सपोर्ट देने के लिए, और 2 मिडफील्डर से हैं ही। तो टोटल 8 प्लेयर्स मिलके इधर अटैक पे जाते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं, जिसकी वजह से प्रेशर इधर बहुत ज़्यादा क्रिएट होगा जमशेदपुर एफसी के लिए। आखिरी कुछ मोमेंट है, पीए अप्लाई किया जाएगा फॉर श्योर, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, और जिसका प्रॉपर फायदा मिल सकता है। लेकिन अगर ये कुछ मिनट सर्वाइव कर जाते हैं, देन जमशेदपुर एफसी के लिए एक सेवियर डे हो सकता है। देखिए इधर बॉल पूरा खाली था, मिस किए, गलत पास, शॉट, No way! इक्वलाइजर दागेंगे हैदराबाद एफसी। जमशेदपुर एफसी ये गलती नहीं कर सकते, बीच में बॉल लूज था वैंडाइक के साथ, आप कैसे उस जगह पे गलत पास कर सकते हो जिधर वैंडाइक खुद एक डिफेंडर है, वो भी लास्ट लाइन पे। Oh, gutted again. Hyderabad FC seem to get away, and the magician Haaland coming to save the day yet again for the second time. Oh my goodness, I can't take it anymore. I'm done. Hyderabad FC have managed to stage another comeback, a beautiful one, and with merely just a few minutes remaining, has completely changed the demographic of the game over here. What do they do right now for Jamshedpur FC? How do they score that winner? Such a last moment equalizer. Now, Hyderabad FC can take that with a smile, right? Because then all they have to do is get a draw or maybe get a victory with Varsi. And this is going to shatter them. Just mere 6 minutes remaining, where even Hyderabad FC would be looking for yet another goal. They would want to end it here, right now. Do not want to go for the third game. Have taken that risk. Let's see what can they produce out of it. A German cross going for Ruud Gullit. Passes it towards Mbappe. Has that room. And they score the winner. No way. Hyderabad FC, just stop it. Staging this epic, historic comeback. And this has been captured on the cameras.
They've done this once in the past. Tonight, they have repeated this. It was against Bengaluru FC. Today, they replicate a similar case against Jamshedpur FC. And this point, TT, I think it's over. It's lights out for Jamshedpur FC. They could get their bags packing already. या एंड आई थिंक उसका जो पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्लेयर्स को ही लेना चाहिए. इधर ना लक इन्वॉल्व था ना कुछ, क्योंकि गलती उनसे हुआ था. उन्होंने मिस पास किया, जिसकी वजह से इक्वलाइजर आया. इक्वलाइजर आने के बाद तो वैसे ही सब कुछ सेम पेज पे आ गया था. इधर कोई और डाउट था भी नहीं. गोल तो स्कोर करना ही था जमशेदपुर एफसी को. अगर नहीं भी करते, ड्रॉ भी होता, देन फिर भी इधर इससे कहने की जो है कुछ फायदा होता नहीं. तो कहीं ना कहीं वो वर्जिल वैन डाइक का पास पूरा जो मैच है एंड पूरा जो टूर्नामेंट है उनके हाथ से बहुत दूर लेके चले गए. एंड विद दैट ये पासेस तो दिखना ही था. हालैंड को लेके आए हैं, दैट मीन्स हम लोगों को दिखेगा ऐसे लॉब पासेस जिसके लिए रेडी रहना चाहिए था. जो कि बोलना, आई नो कि बोलना बहुत ईजी है, डिफेंड करना उतना ईजी नहीं, बट जो डिफेंड करना भी ईजी था उस पर जो गलती हुआ है उसके बाद हो जाता है. तो 3-2 और उसी के साथ एक फाउल एज ऑफ नाउ. हैदराबाद एफसी वो भी चाहते हैं कि वो इधर ये मैच को सिक्योर करे और 3 पॉइंट लेके जाए. कोई सेकंड थॉट्स नहीं रखना चाहते, क्योंकि हैदराबाद एफसी को भी जरूरत है 3 पॉइंट्स की. तो उसके लिए पूरा पूरा ट्राई कर रहे हैं. लेकिन आखिरी 1 मिनट, क्या इधर एक गोल निकाल पाएंगे? नहीं, अभी तक तो नहीं, बट हो सकता है. फाइनल विसल और जमशेदपुर एफसी इस साल के लिए तो प्लेऑफ्स के जो सपने हैं वो शायद सपने ही रह जाएंगे. Yeah. Again, 3 points secured. Nonetheless, for Hyderabad FC, and this man in front of your screen, Haaland, whoever was controlling him, deserves an applause there. A crucial equalizer, and then you could see that German cross. And the sheer cojones on the lads to try and execute that, and somehow successfully do it also. Jamshedpur FC, after playing so well in the first half, again choked in the second. And this is the choke that they're never going to forget. Because, yeah, it might be an aggressive word, but that has happened. Few little mistakes, and it literally cost them the game over here, TT. Their hopes perished, turned into ash. Oh, but nonetheless, what a match it was. It was an absolute thriller right till the last minute. No way, like जमशेदपुर एफसी बहुत दिनों बाद एक ऐसा सिचुएशन बना था जिधर लग रहा था कि मे बी यस, ये मैचअप जो है वो उनके तरफ जा भी सकता है. क्योंकि अभी तक जितने भी उन्होंने गेम्स खेले हैं, आई थिंक ये 8th मैच था उनका, 1 मैच जीते हैं और ये शायद सेकंड हो भी सकता था. लेकिन वो जो अपॉर्चुनिटी था वो गवा चुके हैं. और अभी के लिए हैदराबाद एफसी ये 3 पॉइंट के साथ बहुत ज्यादा खुश होंगे. उनसे ज्यादा खुश शायद ही कोई और होगा आज के दिन पे, क्योंकि कल जस्ट 80 गेम भी उनको पीछे छोड़ के निकल गए थे आगे. तो आज कहीं ना कहीं उनकी तरफ से तो यही था कि उनको जीतना है मैच. तो विद दैट 11 पॉइंट्स पे जंप इन करेंगे. एंड उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो चेन्नई एफसी को भी पीछे छोड़ने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स से, क्योंकि उनका गोल कंसीडरेशन जो है वो कम है चेन्नई एफसी से. चेन्नई एफसी 11 पॉइंट पे थे, बट गोल कंसीड ज्यादा किए हैं. डिफरेंस जो है वो ज्यादा है, उससे इधर कम है. तो आई थिंक इधर जो 5th पोजीशन है वो इधर हैदराबाद एफसी को मिल जाएगा. A much needed 5th spot there, TT. As we take a look at the scorecard, and for one last time, of course, we have the 3rd game, but hey, that's for formalities, right? Nothing's remaining in the final one. It's just, you could say DK will have to play his hearts out. And Varsi could pretty much chill. So it began, Genesid and Arvind went off against each other. We could see the intensity was there, but Genesid finding that at the 87th minute, he scored that winner. And a similar sort of a storyline this time. However, Jamshedpur FC had a 2 goals lead. And just like that, in a span of 10 minutes, I think going for that formation change, going 4-2-4 through the entire kitchen sink out of the window.
and it was just too much. I think they sort of got overwhelmed. Jamshedpur FC could not do much there in terms of their defense because they were in pursuit to maybe find another goal. We did not see a lot of changes being made from their side, and it was needed, right, for Jamshedpur FC, because a mere draw would not have meant anything at all. Then it would have all come down to DK, and had he even won that, they would have just taken home 1 point. So, yeah, Jamshedpur of FC did not have any options there, and that second goal that Hyderabad FC scored, that's so unfortunate, right? Virgil van Dijk, initially he made the save, but then in that passing moment, that is where the ball got stolen. I think stolen away. I think it was Zinedine Zidane there who received the ball, and he made the run for it, and then found that Erling Haaland was in a really nice position, and then all he had to do, Erling Haaland, was just score. And there you go. The players go all out at each other. It's a 4-2-4. It is going to be goals galore, friends. And let's just sit together and enjoy this match. You can kind of call it an exhibition one, because at this point, Hyderabad FC have pretty much won. Nothing much remaining for DK. No matter if he scores 10 or 20 goals, that will still not change the outcome. That will still not earn them any extra point or even a single point. या एंड इधर आई थिंक हैदराबाद एफसी को भी ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा अगर वो इधर 10 या 11 गोल से हारते हैं, देन जाके कहने के हो सकता है कि वो फिफ्थ की जगह पे 6th पोजीशन जो है वो ले सकते हैं। तो आई डोंट थिंक कि वो होने वाला है, तो इसी वजह से वो चल रहेंगे। एंड अभी जस्ट एक नॉर्मल गेम, हम लोग इसका ऐसा इंडिविजुअल गेम लेने वाले हैं क्योंकि ओवरऑल पे तो और कुछ रिजल्ट चेंज होने वाला है नहीं। बट देखिए डीके बॉल छीन चुके हैं, फिर से माल्टिनी फाइनली विद दैट बॉल लेंगे, एंड उसी के साथ साथ तो अभी इस बार हम लोगों को वो गेम देखने के लिए मिलेगा जो कि यूजुअली हम लोग खेलते हैं फीफा, कि बीच में मतलब जिधर भी बॉल है जस्ट दौड़ो, बॉल लो, फिर से भागो गोल की तरफ, फिर से पीछे आओ। तो वही चीज़ें हम लोग को देखने के लिए मिलेंगी क्योंकि दोनों को ही पता है इधर ज़्यादा कुछ है नहीं, जितना ज़्यादा गोल करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर। तो वही हो रहा है। थियो हर्नांडेज लाजवाब एक स्लाइडिंग टैकल, बॉल जीते जरूर लेकिन ज्यादा देर तक उनके पास नहीं रहेगा। Yeah, and there you go. Varsi breaks free. And instantly want to take a shot. Had to also green time that. But Varsi, despite knowing that he's already won, he kind of maintains that steely demeanor, right? Every single time this guy comes to play, he's got that sort of a finesse in him. Very alert. And we know he's been the hero for Hyderabad FC on numerous occasions. And this time also would want to get a win, just a personal accolade. Has went on to defeat an in-form DK. But for DK, I think I really loved DK this season. Compared to his last, where he was struggling a little bit, was quite unlucky. This time, we could see the best out of him. But now Varsi just toying around there. It was too much for DK to tolerate. It was like he just shunned him off there. And now DK tried to initiate his counter-attack, but was foiled. Yeah. Rodolith finally towards Arsenio, मौका बन गया था लेकिन बहुत ही अच्छा डिफेंस। पर देखिए ये जो डिफ्लेक्शन है ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल बना देता है। बट हम लोग बहुत देर से एक ही चीज़ देख रहे हैं कि मिडफील्ड के ऊपर ही बॉल या राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, और ये होना भी है क्योंकि दोनों ही अपना पूरा जी जान लगा रहे हैं। ये क्या हेडर था, वो क्या पावर था ये हेडर पे। गोल आया जमशेदपुर एफसी की तरफ से। एनडी के खुश तो बहुत होंगे अभी, लेकिन आई थिंक खुद से पूरे क्लब के लिए तो अभी ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे ये गोल बहुत अच्छा था। पावर देख के लगा कि पैर से मारा गया, लेकिन वो हेड से आया है गोल। Yeah, and I think you could see the sadness on DK's face. An L2 pass, interesting. And this is one of those matches where you could just experiment and just play as you're playing one of those foot jam matches, right? Has to be still sweaty because it's Varsi ahead of you, but the sheer quality of that goal is something to be just awed at. And DK, feel sad for you, buddy. This time, this man had done so much, has improved so much, but sadly, we won't be seeing him in the playoffs. I don't think there's any chance on earth that Jamshedpur FC qualify, even if the skies come falling down, as DK on another build-up over here.
Tries to go, beautifully done. A nice reverse elastico, just passed through the defense. And he's toying around with Varsi at this point. Yes, Varsi, you won the game. But it's an individual matchup that you cannot afford to lose. And DK playing against his former club. Well, he's definitely taking them out for a ride. एंड देखिए इसी के बारे में हम लोग बात भी कर रहे थे पिछली बार क्योंकि डीके का फॉर्म काफी अच्छा चल रहा है और अगर वो एटलीस्ट पहला गेम ड्रॉ निकल जाता और पिछला गेम उन्होंने बॉटल कर नहीं करते तो शायद बहुत अच्छा मौका था कि इधर से 3 पॉइंट्स निकाल के लेके जाना पर देखिए अभी 30 मिनट हुआ है वर्षे को हम जानते हैं वो कमबैक भी करते हैं जबरदस्त बट आज कोई किसी को नहीं छोड़ने वाला आज लड़ाई हो रहा है ग्राउंड पे क्या टैकल देखिए एक बार ऐसे टैकल्स बहुत कम देखने के लिए मिले इस पूरे सीजन के अंदर सब इधर कोशिश करते हैं कि एकदम सोच समझ के टैकल नहीं करे तो बेहतर जाके क्लोज से चैलेंज करके बॉल निकाल देते हैं इंटरसेप्शंस करते हैं बट आज स्लाइडिंग टैकल दिख रहा है दोनों के ही चेहरों लाइक आंखों पे आग दिख रहा है कि कुछ हुआ नहीं है और देखिए इस बार फिर से I think now Varsi has gotten a little serious. He's like both of them. You can see they started off with a 4-2-4. Now both of them have made the adjustments, right? Going with 4-3-2-1. Then we can see a 4-1-2-1-2 from DK being exercised. But today is one of those days. I kind of have just leaned down my seat. I'm just relaxing, just chilling over here, watching two beautiful players just play FIFA. And this is where DK has been stunning so far. I think words fall short to describe how many beautiful goals that this man has created in this season's campaign, right? Uh, it I think begun with that Lionel Messi scoring where he scored out of a free kick. That was a bullet, to be honest, and it just pierced through the keeper's heart, went right in, and this time he kind of carried on with it, right? And every single thing he's doing, he's showing that he's got so much in his arsenal, right? The first goal he scores from across, and then the second you could see that beautiful skill move performed there, goes in, takes that shot, and Varsi is taken aback. And then Varsi realizes, nah, if I'm going to do that, I'll be in for a thrashing. And there have been players who have thrashed Varsi before. He's taken quite some, hefty defeats, and he would not want a repeat broadcast of that. एंड इधर डीके को भी थोड़ा बच के चलना होगा तो ऑपोजिट पे वॉर्सी है देखिए एक बार फिर से मौका बन रहा था और डीके आज वैसे सिर्फ आज ही नहीं वो हमेशा थोड़ा एग्रेसिव खेलते हैं और जिसकी वजह से हमेशा जब भी वो कोई डिफेंडर को भी आगे लेके जाते हैं तो भी दिखता है कि वो जस्ट डिफेंडर बॉल छीन के लेके चले जाते हैं और वो प्लेयर कहाँ जाके गिरता है किसी को पता नहीं होता तो अभी मौका बन चुका है वॉर्सी के लिए बट लूशियो बेहतरीन स्ट्रक्चर मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं लेकिन इस बार के लिए काउंटर पे जाएंगे एम्बापे उनका रन इन हकीमी ऑन द साइड एंड यही होता है जब आपके पास फुल बैक जो है वो सही जगह पे मौजूद रहे देन आपके लिए तो प्रॉब्लम नहीं होता बट जब नहीं रहता तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है बीचों बीच से निकाला गया है और अभी तक तो फिर भी वो जो थ्रू पासेस है वो देखने के लिए नहीं मिला है डीके की तरफ से वो चालू होगा आई थिंक नेक्स्ट हाफ पे देखने के लिए मिलेगा जब हालैंड को लेके आएंगे तब देखने के लिए मिलेगा लेकिन अभी तक जिस तरीके से गेम चल रहा हुआ देखने के लिए मिला उससे एक चीज़ तो पता चल रहा है कि डीके का जितने भी फ्रस्ट्रेशन था वो सब निकाल रही है इस गेम पे और वो जस्ट चाह रही है कि जितना ज़्यादा हो सके नेट्स पे मारते रहो एक शॉट लेने का मौका मिला था इधर हैदराबाद एफसी और से को वो भी शॉट ऑन टारगेट नहीं था And I think DK has done enough to contain Varsi, right? And when you could see these two players started off with 4-2-4s, you were kind of expecting them to go a little YOLO. I thought was expecting we get to see Ibra tonight. Because had Mufu been there, even Dugal said, none of these players, everybody's try-harding. Come on, just take a chill pill, just take a deep breathe and just think like, yeah, you've done it already.
At least Varsi could have afforded that. And nonetheless, the Ibra 93 card, the Foot Centurion, if I'm not wrong, is amazing. And interestingly, we haven't seen Neymar this time, even once, being played. Yeah. But now, again, DK is on the break with Messi, Ooh. takes a chip shot, did not green time it, and the keeper was also intact on his position. This time, Hyderabad FC. All right. DK, he's just being relentless, taking shots after shots after shots. And, well, Varsi's just getting on his defenses only. Hasn't got a lot of opportunities, but this time again Wow. with Virgil van Dijk. I think DK has practiced this set routine and he scores, but there you could see the celebration not coming through. He's not happy. He knows that had that game been won by them, then he could have been happier. He could have rejoiced. He could have enjoyed these moments. But TT, we know the outcome. Despite DK even thrashing Varsi, changes nothing at all. यस एंड डीके अभी तक अपने पूरे सीजन पे भी बहुत कुछ ऑलरेडी कर चुके हैं अपनी टीम को जिताने के लिए, अपने क्लब को जिताने के लिए, आगे लेके जाने के लिए, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि कोऑप गेम भी उनका इतना खास रह गया एंड विद दैट विन का फॉर्म थोड़ा डाउन चला। बट यस, देखिए डीके की तरफ से लाजवाब परफॉर्मेंस देखने के लिए मिला है अभी तक एंड आज भी वो करते जा रहे हैं बीचों बीच से रोनाल्डिनियो। Oh no. Now what? I kind of thought he take that shot with Ronaldinho, but he kind of bent over, then went for R9, and that did not go through. Anything and everything is going wrong for Varsi at this point. And now you can see Varsi is trying to play a lot longer. Now he's going for those aerial balls, but this time box-to-box approach, passed it on to his Ronaldinho, wanted to get through, perform an elastico, but was not given that chance as DK again breaks loose. Oh, had he taken the ball over with Theo Hernandez there, it would have been pretty much done and dusted. But now spacing in with Virgil van Dijk. Hello, DK, are you okay? एंड आई थिंक फीफा 23 वर्जन के ऊपर बहुत बार ऐसा होता है कि ऑटोमेटिकली लिंक जो डिफेंडर है वो दौड़ के आगे चले जाते हैं, तो उसका फायदा मिल सकता है अगर आप सही से देख के कैलकुलेट करके पास दे सकते हो, तो हाइट का एडवांटेज कहीं ना कहीं मिलता है डिफेंडर्स के, तो वो लेने की कोशिश था। बट इस बार एक्चुअली मौका मिला बट ये भी सही से कनेक्ट नहीं हुआ और वैंडेसा तो मौजूद है ही है। एक बार फिर से आगे आएंगे लेकिन इस बार डीके आगे आएंगे, क्या सेम चीज रेप्लिकेट कर पाएंगे जो कि डीके किए थे? नहीं, शॉर्ट कॉर्नर के साथ ही इधर गए वॉर्सी, बेलिंगम, एम्बापे। कोशिश पूरा वही है कि साइड से एक्सप्लॉइट करके बीच में एक पास एंड फिनिश करे, ड्रिवन शॉट लगाए, लेकिन देखिए वो अभी के लिए तो नहीं हो रहा। बीच से निकलने की कोशिश था लेकिन बहुत शानदार फिजिकल चैलेंज देखने के लिए मिला है हकीमी की तरफ से एंड रोडुलित को इस तरीके से रोक पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जाइंट रोडुलित, लेकिन देखिए रन था बट वर्जिल वैन डाइक सही टाइम पे इंटरसेप्ट किए, नहीं तो चौथा हो सकता था। Oh yeah, it certainly could have been the fourth. And with the way DK has been playing, I'm pretty sure we're gonna see a fourth, because this player, he's just so amazing. And Varsi getting back to his old days. One of those matchups I remember. I think it was FC Goa against him, and it was Ali Zima who thrashed him 6-1, and that sort of seems similar. And now at the 75th minute, of course, of course, an offside was there, but yeah, this is the point where Varsi, I think, makes a few important changes. I guess gets back to his for 4-4, and then starts attacking with all his might, because from a 3 goal deficit you do not want to be playing defensive, right? You would want to go all out, and that could be his intent over here. Maybe even go for a 3-4-3. That is also on the cards, but I think so far we've seen these players. 4-4 has also been their go-to approach. Now with 15 minutes remaining, DK, these are his
he still has few more games to go, like 2 more to play, but they know that outcome is not gonna change at all. Yeah, but Warsi, I think कुछ ये सब गेम्स ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है उनके लिए भी जिनका फॉर्म या तो डाइसी चल रहा है या फिर नहीं हो। वॉर्सी कोशिश कर सकते हैं कि एटलीस्ट इधर से गोल स्कोर करे, जिसकी वजह से उनको कॉन्फिडेंस वापस आए या फिर जो फॉर्म या फिर लय जो भी कहे उसको वो वापस आए इनका, क्योंकि देखिए मोमेंटम आपको बनाना पड़ता है, आपका खुद ब खुद नहीं आता। तो वो मोमेंटम कहीं न कहीं बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर वो 3-0 से हारेंगे, या वी नो कि इधर कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक मोरल बूस्ट कहीं न कहीं मिल जाता है अगर आप जीतते हो कोई भी गेम को। बट देखिए इधर जो बीच से निकलते हुए एक बार फिर से वॉर्सी फाइनली टुवर्ड्स ज़िनेडिन ज़िडान, रोडहुली टू एम्बापे, शानदार 1-2 बट वर्जिल वैन डाइक पे जाके सब के सब कोई बॉल जो है उधर ही दे दे रहे हैं, और लाइक दे दे रहे क्या, वो खींच के Oh, लेके जा रहे हैं, लेकिन इस बार हालैंड शॉट लिए लेकिन हुआ नहीं गोल। yeah. And I think DK has been repeating this time and again. And with Erling Haaland, you know that kind of a pace you get. Also, that physicality, easily just beats your defenders, beat Virgil van Dijk, beat Maldini, whosoever it may be. But Varsi just trying to dribble the ball, keep possession. But DK says, hey, sit down, Varsi. It's not your match. It's mine. Of course, you've taken those 3 points, but let me have the last laugh. Let me go out with my heads held high as a green time shot there. Little far-fetched, little overwhelming from Varsi, but yeah, I think nothing much to do, had been easily dealt with, as now DK breaking free. This time has got a chance for that chip shot, but he instead decides to pass on towards Kylian Mbappe. But Virgil van Dijk was present. विद लूशियो फिर से एक बार एक और चांस हो सकता है, उसे भी हो बहुत शानदार। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, अगर ये गोल चला जाता तो क्या करता मुझे नहीं पता, क्योंकि जो बिल्ड हुआ था वो लाजवाब था। राइट फुट से चिप किए, बॉल ऊपर गया, टर्न किए, गिरते गिरते शॉट लिया लेफ्ट फुटर, एंड वैंडे साहब फाइनली सेव किए। नहीं तो क्या स्टाइलिश गोल होता है ये। टैक्स हो गया, लाइक गोल हुआ नहीं है लेकिन 3-0 से जीते जरूर। और ठीक है, जीत के भी नाखुश होंगे क्योंकि वो 3 पॉइंट्स जो है, वो 3 पॉइंट्स का कोई भी पॉइंट इस मैचअप से निकाल के लेके नहीं जा पाए। Yeah, but those 3 goals are, I think, big contenders for the top goals of this particular week. I'm pretty sure one of them is for sure going in. And if you talk about the most hilarious goal, had to be the one in co-op, right, where they scored out of a corner. And today DK also did that again in his individual matchup, scoring the 3rd goal with Virgil van Dijk like that. But this time, Varsi had kept his keeper intact. There you can see, Virgil van Dijk had read that play. In fact, Van der Sar had read the play, but Virgil van Dijk just being too good over there. And Varsi, you could see, right, every single time, he's a very emotional player. We have seen even in the past, whenever he scores, he celebrates. You can see that smile, every single time, does this, does that, something. There's some sort of an emotion. But today it was like, you could see that guilt on his face, right? You could see that, yes, they messed up big time, and this costed them their qualification slot to the playoffs. But kudos to Hyderabad FC. They ensured that they finished it in the first 2 games only, and Varsi did not have to sweat it out. He just had to get by with this game. As we take a look at the scorecard, folks, and for the final time, there you see it is 3 points in the bag for Hyderabad FC, courtesy to the first 2 games victory. There was nothing remaining for DK to salvage in the final one. Yeah. And with that, finally, कहीं ना कहीं हैदराबाद एफसी अपना जो पोजीशन है वो बहुत ही शानदार जगह पे लेके जाएंगे, एंड चेन्नई एफसी को भी पीछे ढकेल देंगे। एंड इस बार जो टेंशन है वो बढ़ चुका है फिर एटीके मोहन बगान के लिए। देखिए, इनके लिए रोज का ये बात हो जाएगा, जब जब गेम्स होंगे तब तब ये होता हुआ दिखेगा। बट उसके पहले
इस गेम के कौन थे वो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर? ऑब्वियसली इधर हम लोगों को देखने के लिए मिले हैं जेनेसिड, क्योंकि उनका क्लब इधर जीता है और बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल उन्होंने प्ले किया था। आखिरी मोमेंट पे जो गोल उनके तरफ से आया, अरविंद को उधर उन्होंने हराया, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अगर नहीं हारते तो शायद इतना ज़्यादा प्रेशर बनता भी नहीं जमशेदपुर एफसी के ऊपर। मे बी वो प्रेशर अगर नहीं बनता तो वो गलत पासेस भी नहीं होते, और वो गलत पासेस नहीं होते तो वो जीतते भी नहीं। तो बहुत कुछ कनेक्टेड रहता है एक दूसरे के साथ। और एक चीज तो पता चल रहा है कि जेनेसिड, इनका चलना बहुत इंपॉर्टेंट है हैदराबाद एफसी के लिए। अगर ये नहीं चलते फिर डगमगाहट का सामना करना पड़ता है। You know, we have seen this in the past also. At this time, however, it has been captured on live broadcast. I think, yeah, I'll take you down to that matchup between Hyderabad FC and Bengaluru FC, right? If you remember, Yeah. we kind of got caught off from the broadcast there. The game crashed, and it was just mere 10 minutes remaining, and suddenly they scored 3 goals and staged a comeback out of nowhere. And it was a 90th minute equalizer, and they were in contention where Varsi went on to beat Shagnik, and that was also a killer of a game. So Hyderabad FC, they always tend to give you those heart attacks, right? And this is where their real power also lies, and they've showed that tonight as also, because the journey still does not stop. Again, it's going to be an uphill task, but a step in the right direction for Hyderabad FC. But with that being said, we are done with this fixture. We will be taking a short little break, because coming right after, another interesting one awaits you all.